ठीक है। ओके अगेन ये जो दिख रहा है आपको ये इमेज में, सो दिस इज लाइक अ समरी ऑफ मतलब कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, मतलब कि मॉलिक्यूलर लेवल पे उसमें क्या चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द डाइजेशन। सो इफ यू सी हियर this is a maltose, we know that this is a disaccharide sugar। अब मुझे बताओ कि ये बॉन्ड कौन सा था। Can anyone tell me the bond which is present between this? क्या हो सकता है, कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और ये कौन सा होगा? अल्फा 1,4 अल्फा 1। exactly, so that is broken down by using a water molecule। okay, so this is actually hydrolysis reaction, है ना, because water is used for breaking this bond। और वो जो एंजाइम होगा वो कौन सा होगा? हाइड्रोलाइसिस ना। फिर ये क्या करता है? दैट विल कन्वर्ट। तो ये एंजाइम यहाँ पर कौन सा होगा? माल्टेज होगा ना। द एंजाइम विल बी माल्टेज, so that they will form the two different glucose molecules। so same, almost same mechanism will occur for the fructose, for the sucrose and for the lactose, है ना। लैक्टोज में क्या फॉर्म होगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ओके, एंड सुक्रोज से क्या फॉर्म होगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इज इट क्लियर? सो दिस इज अ सिंप्लीफाइड इमेज ऑफ द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? प्रोटीन्स का। अब देखो जैसे ये क्या हो गया? दिस इज अगेन लाइक यू कैन सी दिस इज अ पेप्टाइड, है ना। एक इसमें क्या है? दिस इज अ डाइपेप्टाइड, क्योंकि देखो यहाँ पे एक अमीनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है एंड एक अमीनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड दिस इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, सो हाउ कैन वी ब्रेक दिस पेप्टाइड बॉन्ड? बाय हाइड्रोलाइजिंग दिस बॉन्ड। तो कौन करता है? पेप्टिडेज एंजाइम। ओके, so they will break down this bond to form the individual amino acid। तो ये एक बेसिक होता है। ओके, सो यू कैन सी मतलब कैसे, मतलब जब आफ्टर बॉन्ड ब्रेक्स तो मतलब क्या रह जाता है? द रिमेनिंग पार्ट। ओके, सो दिस इज हाउ द डाइजेशन ऑफ पेप्टाइड्स और द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड टेक्स प्लेस। ठीक है, इसके बाद एक और है यहाँ पे, ये देखो लिपिड्स का। लिपिड्स आर यूजुअली व्हाट? they are what? They are triglycerides। देखो यहाँ पे है ना, so this is one glyceride compound, second, third। so for breaking each glycerides we need one water molecule। so as this is a triglyceride, so we need 3 water molecules। so this is a key point, you have to remember this key। for breaking one fat molecule or for digesting, for the complete breakdown of triglyceride, okay, for complete breakdown of one triglycerides into fatty acid and glycerol, we need 3 water molecules। okay, this number is important। okay, if you want you can note down this in your notebook। for the complete breakdown of one triglycerides into fatty acids and glycerol, okay, 3 water molecule is needed। is it clear? yes, Yes। all can note down this, okay, because they might ask you this type of questions। और देखो ये कैसे फॉर्म हुआ, फिर दिख रहा है यहाँ पे एक C17H35 वाला कार्बन चैन is now present here, so they will separate it from each other, है ना, and this is nothing but a kind of fatty acids। अगर आप देखोगे यहाँ पे, so this fatty acids are nothing but the long chain of like acidic acid। देखो जो एसिडिक एसिड होता है वो क्या होता है? CH3COOH, ये होता है ना। and if I magnify this, if I write the branch structure of this structure, तो ये कैसे दिखाई देगा? C double bond OH, फिर क्या होता है? CH3, ये स्ट्रक्चर है एसिडिक एसिड का। अब नाउ यू कंपेयर दिस स्ट्रक्चर with this, दिख रहा है?
So fatty acid is nothing but the long chain of the acetic acid. अब समझ में आ रहा है? Is it clear? And this acetic acid is joined with the glycerol, which is alcohol. ये alcohol है ना? Yes. Are you getting this or not? Yes, sir. So Yes. during the formation of this glyceroids, this water molecule will again come out. तो फिर कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग होता है जो यहाँ पर था. ठीक है, चलो. फिर next is what? So after the digestion, okay, so these are like few glimpses of how the digestion takes place in the duodenum and in the stomach, है ना. उसके बाद जो next आता है that how the absorption of the different food substances takes place. So actually it happens, or it is done by the simple diffusion, by the passive, active and facilitated transport. Okay, simple diffusion is what? It happens along the concentration gradient, है ना? Along the concentration gradient. Passive also happens along the concentration gradient. Facilitated also happens along the concentration gradient, but this active transport happens against the concentration gradient of the material. ये सबको पता है? Yes? Yes, you all know. Yes, sir. Okay. So in this facilitated transport, special carrier protein is present. Okay, in this facilitated transport, special carrier or the transporter protein is present. Like for example, देखो जैसे एक होता है, suppose this is a cell membrane and suppose this is a protein which is present in the cell membrane, and suppose this protein is helping in the transportation of water molecule from the outer side towards the inner side along the concentration gradient or against the concentration gradient, but this protein is facilitating, so this protein is called as water transporting protein, or to be very precise, the name of this protein is aquaporin. So aquaporin is a protein which is present in the cell membrane, which allows the transportation of the water across the cell membrane. जैसे एक और होता है which is called as glucose transporter proteins, GLUT protein. In simple word, that is called as GLUT protein. So this protein helps in the transportation of the glucose across the cell membrane. समझ में आ रहा है? So the absorption of the digested food occurs by simple diffusion, passive, active, or the facilitated transport mechanism. Like there are few examples are given. Say the simple diffusion of glucose, amino acids, and some electrolytes like the chloride ions mostly. Okay, some like the chloride ions. So for the absorption of all this, it will follow the simple diffusion. Like for example, just imagine karo ki this is the lumen. Okay, imagine this is the lumen in which the digested food is present, and these are the cells lining the lumen. ये क्या है? These are the cells which is lining the lumen. Okay, so the chlorine molecule, chloride ions or the glucose molecules, okay, sometimes it can directly diffuse from its area of higher concentration towards the area of lower concentration. So glucose, it can move from the A, suppose these dots represent the glucose. So inside the lumen, the concentration of glucose is very high, and inside the cell, the concentration is very low. So it will directly move from the higher concentration towards the lower concentration. ठीक है? So this is called as simple diffusion. तो इसके through
the glucose molecule, the amino acids and the electrolytes can easily be absorbed. Sometimes this glucose and amino acid can also be absorbed by the facilitated transport. इतना clear है? Yes. Yes, sir. Okay. So next यहाँ पे क्या है? This is the osmotic gradient for the water transport. Osmotic gradient. Anyone knows what is osmotic pressure and all? किसी को पता? बताओ. ये osmotic pressure क्या होता है? At least you should know this, na? कि what is osmotic pressure and what is osmosis? Movement of solute particle across the gradient, concentration gradient. या फिर सही definition उसका ये होता है कि movement of solvent molecule from the area of its higher concentration towards the area of its lower concentration. Like for example, if I explain you, suppose this is a beaker separated by a semi-permeable membrane. So this is semi-permeable membrane, and if I fill this equal amount of water, and if I add solutes, if I add more solutes in this and less solute in this, okay, so the water molecule from the B side to A side, okay, the water molecule will move from the B to A because the concentration of solute is higher in this and concentration of solute is low on the B side. So to equalize the concentration of the solution, okay, or to just dilute or to make the equal solution concentration, the water molecule will move from B to A. So the movement of water molecule from the area of low solute concentration towards the area of high solute concentration, or we can also say the movement of water molecule from the area of high solvent concentration towards the area of low solvent concentration is called as osmosis. एक simple मैंने बहुत ही fast बताया, but it needs some time to understand. But I assume that you have understood this concept कि osmosis होता कैसे. So to maintain the osmotic gradient of a body, okay, osmotic gradient for the water transport. So for example, suppose this is the lumen of the body, and again suppose this is these are the lining of the cell, okay, and assume करो कि यहाँ पे क्या है, solution का concentration काफी कम है, okay, low solute concentration, और अंदर क्या है, solution concentration ज्यादा है. So water will directly move from the lumen to inside a cell. मतलब in short मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो water का जो है ना transportation, वो किसके वजह से होता है? Osmotic gradient. Okay, like if the osmotic pressure, let's just imagine करो, suppose देखो ये क्या है, this is A side और B side, okay. अगर ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ का ज्यादा होगा ना, ठीक है, तो पानी जो है यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ फ्लो होगा. ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? लाइक इन सिंपल वर्ड्स व्हाट यू कैन से, osmotic gradient is also required for the transportation of water. एक होता है ना endoosmosis, exosmosis, so that is also helping in the transportation or in the absorption of water. ठीक है, इतना क्लियर है? Yes. फिर लास्ट कौन सा? ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयंस बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसमें एटीपी यूज होता है, ओके, एंड सम फैटी एसिड्स एंड द ग्लिसरॉल्स. ये आपको मैंने बताया था ना कि फैटी एसिड and the glycerols, so they will make the micelles. Micelles से फिर बनता है chylomicron in the mucosal epithelial cells, and from that the lacteals. फिर lacteals से क्या फॉर्म होता है, कहाँ पर जाता है वो? ब्लड के अंदर जाता है. So this is the transportation of the fatty acids and the lipids. कि ऐसे इसका absorption होता है. इतना क्लियर है? Yes. Yes, is it clear or shall I repeat all this again? मैं फिर से repeat करूँ या फिर ये clear है, बताओ मुझे.
sir. चलो ठीक है फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है, एक मिनट, ठीक है, तो ये क्लियर है, दिस इज द समरी ऑफ डाइजेशन, इतना क्लियर हुआ। सो माउथ में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ द सर्टेन ड्रग्स, स्टमक में वाटर, सिंपल शुगर, अल्कोहल एंड द ड्रग्स, मोस्टली पेन किलर। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द सम कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल शुगर, फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स, ठीक है, ये सब का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। और ये पता है ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन एंड द डाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो भी कौन से रीजन में, डियोडेनम में, ठीक है, और डाइजेशन भी सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, डियोडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन, इसका मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम मिनरल्स ओनली, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. चलो फिर एक डिसीज है, ऐसे बहुत सारा डिसीज है, उसमें से एक डिसीज कौन सा है, ये जॉन्डिस। देखो एक पर्सन का फोटो यहाँ पे ऐड किया मैंने, तो देखो जस्ट डिफरेंस कितना उसका, जस्ट जैसे कि ये नॉर्मल इमेज है, मतलब व्हेन दिस पर्सन वाज अ नॉर्मल एंड व्हेन दिस पर्सन इज हैविंग जॉन्डिस, है ना। सो येलो कलरेशन ऑफ द बॉडी और द स्किन इज फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ दिस जॉन्डिस। तो ये एक सिम्टम्स क्या है जॉन्डिस का, मतलब कि येलोइंग ऑफ द बॉडी सरफेस, बट ये क्या है, दिस इज आल्सो एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। Yes, sir. Then how does में digestion system affect, sir? क्योंकि मतलब कभी कभी क्या होता है कि ड्यू टू लाइक मैल फॉर्मेशन ऑफ द बाइल डक्ट, मतलब अगर आपका बाइल डक्ट प्रॉपरली, इफ दैट इज नॉट रिलीजिंग द बाइल जूस इनटू द ड्यूडेनम, तो वो जो एक्सेस ऑफ बाइल जूस है ना, दैट इज अगेन लाइक सेंट बैक टू द लिवर, तो वो जो है ना ये या फिर ये देखो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये सब जो केमिकल्स है ना, सो दे आर नॉट, इफ दे आर नॉट गेटिंग एक्सक्रीटेड आउट प्रॉपरली, तो फिर वो क्या होता है कि आवर बॉडी विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग दैट केमिकल्स जस्ट बिलो आवर डर्मिस, ओके। तो ये सब प्रॉब्लम आता कहाँ से है, ड्यू टू द मैल फॉर्मेशन ऑफ द बाइल डक्ट। तो अगर ये बाइल डक्ट, क्यों, बिकॉज बाइल डक्ट अगर सही से फंक्शन नहीं करे, देन व्हाट विल हैपन, द बाइल जूस इज नॉट गेटिंग रिलीज्ड प्रॉपर्ली इनटू द ड्यूडेनम, और अगर बाइल जूस प्रॉपर्ली रिलीज नहीं हो रहा तो इससे क्या होगा प्रॉब्लम कि द मेटाबॉलिज्म ऑफ दिस बाइल सॉल्ट like and the bilirubin, biliverdin is not occurring properly, ठीक है। तो फिर अपने बॉडी में स्किन के जस्ट बिलो द सरफेस, जस्ट बिलो द डर्मिस, ये सब केमिकल्स जो, ये सब जो कंपाउंड दे आर स्टार्टेड गेटिंग एक्यूमुलेटिंग। Why? Because these chemical compounds like bilirubin, biliverdin, when they are exposed to the sunlight, it is getting degraded. That is why doctor says a person who is suffering from the jaundice to stay in the sunlight. Why? Because the compound getting, that will get degraded if they are exposed to the sunlight. समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट क्या है जॉन्डिस का? Yes, sir. तो एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, बाइल डक्ट के फंक्शन में। इसके वजह से क्या होता है, लिवर में कुछ प्रॉब्लम होता है, मतलब इवन द लिवर इज नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली, सो इवन दिस लिवर इज नॉट एबल टू रिसाइकल, और जो देखो लिवर के पास जो आता है ना वो बाइल, उसमें क्या कहते हैं, बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, तो मेन एक्चुअली वही कॉन्सेप्ट है कि अगर वो प्रॉपरली अपने बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा, सो दैट विल कॉज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो जो कंपाउंड है, वो जो पिगमेंट्स है, वो कहाँ पर डिपॉजिट होता है, अपने स्किन के नीचे, सो दैट कॉजेस येलोइंग ऑफ द स्किन बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ दिस पिगमेंट्स, ठीक है। सो दिस इज How is वाया ब्लड सर्कुलेशन ना, how is pregnancy also caused?
In pregnancy, for example, in this pregnancy, in the सिर्फ प्रेगनेंसी में बेबीज को होता है ना जॉन्डिस? yes, far as babies can I- also suffer from the jaundice, but even the mother can also suffer from the jaundice. Babies में क्यों होता है? Because their liver is, if their liver is not functioning properly due to any reason, then babies को होगा jaundice. But females में कब होगा? जैसे for example, if the production of blood cells is not proper, if the breakdown of blood cell is not proper, then it may lead to the jaundice in the females also. Yes, Piyu? सर तो मतलब like I have heard that कि विटामिन डी का deficiency also, that's why they are said कि you have to like babies जब रहते हैं तो you have to sunbathe every time. No, vitamin D के absorption के लिए is okay. Like for the synthesis of vitamin D, we need sunlight. Okay, वो तो जरूरी है. बट जॉन्डिस में क्या होता है कि अगर आपका ब्लड का फॉर्मेशन, जैसे आरबीसी का ब्रेकडाउन अगर प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है या तो उसका सिंथेसिस प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, सो दैट इज रिलेटेड विद एरिथ्रोपोइसिस. एक ये कॉन्सेप्ट होता है एरिथ्रोपोइसिस, मतलब इसका फॉर्मेशन कहते हैं, मतलब ये प्रोसेस क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स ना. तो अगर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन प्रॉपर टाइम पर नहीं हो पा रहा, देन द रिसाइक्लिंग ऑफ द कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल. मतलब कि उसमें का जो आयरन ग्रुप है, मतलब एवरीथिंग इज रिलेटेड. ठीक है, तो ये जॉन्डिस का जो कुछ कॉजेस है, जैसे येलो फीवर, tuberculosis, malaria, ये सब में क्या होता है कि liver is badly affected, and once the liver is badly affected, your liver will not produce sufficient amount of bile juice, or your liver is not able to excrete the bilirubin and biliverdin properly. तो फिर वो सिचुएशन में क्या होगा? These compounds, bilirubin and biliverdin, ये क्या होता है? These are accumulated, these are started getting accumulated just below the skin. ठीक है, so these are the few conditions. सबसे important इसमें कौन सा आता है? This malformation and this liver problem. Yes, Piyu, this was your, ये आपका डाउट था? Yes. Yes. चलो, so this is jaundice. उसके बाद एक और कौन सा आता है? That is उसके बीच में एक और है कुछ, डायरिया, डिसेंट्री, वॉमिटिंग. बट आई थिंक सो मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग रेगुलर डिस्कशन कि डायरिया, डिसेंट्री में क्या होता है? दैट द पर्सन हैज अ लूज मोशन. व्हाई? बिकॉज देयर लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट एबल टू एब्सॉर्ब द वाटर फ्रॉम द फीकल मैटर. एंड वॉमिटिंग में क्या होता है? दैट गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, है ना? नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली नहीं, बट what happens that valve gets upturned ना, तो फिर जो फूड का जो स्टमक का जो कंटेंट है that will come out of the stomach. but ये important है, this protein है ना, ये आपने शायद से देखा होगा. इसमें एक आता है marasmus and the second one is kwashiorkor, है ना. so why this happens? due to the under consumption of the proteins, and mostly it is associated with the poverty and low quality of food. तो ये कौन सा है? दिस इज क्वाशियोर्कर. ओके, एक और कौन सा होता है? मेरास्मस, पता है ना आपको? तो मैं इसमें फोटो ऐड कर देता हूँ. ये क्लियर है? सो दिस वाज द लास्ट सब टॉपिक ना, PEM. ये देखो, ठीक है, यही है ना क्वाशियोर्कर और मेरास्मस का डिफरेंस दिख रहा है? तो ये क्या है? क्वाशियोर्कर में Yes, in a children whose diets are deficient of the proteins, और मेरास्मस किस में होता है? अगेन इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन्स एंड कैलोरी. एक ये होता है, बट ये मोस्टली जो मेरास्मस है ये किस में दिखता है? कॉमनली सीन इन द इन्फेंट्स अंडर 1 year ऑफ द एज, मतलब कि मोस्टली इन्फेंट्स में दिखता है. एंड ये कब होता है? बिटवीन द एज ऑफ 6 months
till the age of 3. But difference सबसे ज्यादा इसमें ये है, ये third point, subcutaneous fat is preserved, but in this subcutaneous fat is not preserved. देखो जैसे आपको मैंने ये इमेज दिखाया था, देख रहा है आपको, इसके जो स्किन के नीचे जो है फैट वो स्टोर्ड है, so subcutaneous fat is preserved, but ये चाइल्ड में देखो subcutaneous fat is not preserved, मतलब ये क्या होता है, वो भी यूटिलाइज हो जाता है. Is it clear? एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज एडिमा इज प्रेजेंट. एडिमा इज व्हाट? इट इज अ काइंड ऑफ स्वेलिंग, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिमा कहते हैं ना. सो एडिमा इज प्रेजेंट इन दिस, बट देयर इज नो एडिमा. यू कैन सी, देखो इसमें कोई एडिमा है, स्वेलिंग से किसी टाइप का नहीं है. एंड बट इनका जो लिवर होता है दैट इज वेरी इनलार्ज्ड एंड नो फैटी लिवर. Ribs are very prominent. Their ribs are not prominent in the marasmus. So these are the few differences. बहुत सारा है, जैसे lethargic, alert and irritable. So अगर किसी person को kwashiorkor है, so this person will be very lazy, है ना, but ये बहुत ही alert and irritable होगा, मतलब very sensitive. Okay, muscle wasting mild or the absent, voracious feeder. बट ये जो है, दिस चाइल्ड विल हैव पुअर एपेटाइट, ये क्वाशियोर्कर वाले का. सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिम्टम्स. एंड ये जो मेरास्मस है, दे विल हैव वेरी गुड एपेटाइट और वोरेशियस फीडर. तो इसको क्या लगता है, the person suffering from the kwashiorkor needs adequate amount of the proteins, and the person suffering from the marasmus needs adequate amount of protein as well as fats and the carbohydrate. So what is major difference? Kwashiorkor happens due to deficiency of proteins only, and this happens due to the deficiency of proteins, fats and carbohydrates. But protein is the major factor. दोनों में क्या है, protein is a major factor. Is it clear? और मालूम है ये swellings क्यों होती है? Because the blood will lose water into the interstitial space. ठीक है, मतलब उसका मीनिंग क्या होता है, assume करो कि these are the cells. Okay, these are the cells of a tissue and this is a blood vessels. Okay, so in the kwashiorkor what happens, the blood protein is degraded to get the energy. So now the concentration, osmotic pressure of blood decreases. This causes flow of water from the blood inside the tissue, and this causes swelling of the tissue. So ये edema क्यों दिखता है? Because of the exosmosis or the loss of blood proteins. Yes, is it clear? So I think so this was the last topic, na? Or anything else?